हेलो एंड वेलकम बैक। आप लोगों के कुछ कुछ कमेंट्स आए कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम जो कवरेज कर रहे थे अपने चैनल पे वो कंटिन्यूड रखी। बट एक्चुअली जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से फ्लूइडिक हो गई है और कंटिन्यूस चेंज आ रहे हैं, इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किस पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस कमेंट्री पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हम भी फ्लो के साथ ही सारी सिचुएशन बनती भी और समझती भी देख रहे हैं। और जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है ना, तो ज़्यादा इंटरप्रिटेशन हमारी समझ से सही नहीं रहता। इसलिए अभी फॉर द टाइम भी हम उस पर्टिकुलर बात को अवॉइड कर रहे हैं। मगर हाँ, वीकली राउंड अप ये एक रिचुअल है जो हमने कंटिन्यूड रखा हुआ है। और जब भी मार्केट करे कंफ्यूजन या आज जिस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया, तो ज़रूर एक सपोर्ट, एक समझ की ज़रूरत पड़ती है जो हमें आगे का डायरेक्शन दे सके और बता सके कि ये आज या पूरे वीक में जो हुआ उसके पीछे के कारण और गोइंग फॉरवर्ड क्या हो सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स ब्रिंग इन एके और बात। गुड इवनिंग। Good evening. Good evening. How are you? I am confused. I am totally confused. And besides, this is for the first time. Just sharing a viewpoint that I have been continuously speaking with many people in the markets. All of them are very confused. आपका क्या हाल है? मेरा इनफैक्ट आई वाज ये इस वीक जो हुआ है रचित, मतलब आपने वो स्टोरी सुनी होगी, शेर आया। मतलब क्या है वो, बार बार अगर कोई बोले कि शेर आ गया और एक्चुअली शेर नहीं आए, तो जब एक्चुअल शेर आता है तो फिर लोग बिलीव नहीं करते हैं कि शेर आ गया। थोड़ा थोड़ा उससे वैसे सिमिलर चीज इस बार हुई है। I have been telling you for the longest time whether it's the uh, end of conflict in West Asia, or it's any FTA deal with any country. I have been telling you for the longest time that please believe it once it is done. There is news being made around it to to create a good vibe, if I may say so. मार्केट मूड्स अच्छे करने के लिए ऐसा न्यूज़ क्रिएट की जाती है एंड वो अनाउंस की जाती है, बट इवेंचुअली होता क्या है कि अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू दैट is always looming until the time it's signed. And like if I remember clearly in the last video, मैंने आपको बोला था कि it is looking like they will announce it. The mayor of Iran has pointed out certain terms of the agreement, and for the first time both of them have not contradicted each other. अभी तक तो contradict ही कर रहे थे. So there is one positive sign that it might it might be announced. I had a feeling that it might be announced, but I also had that one tiny bit of डाउट इन माई माइंड, वो 1% जो डाउट होता है, 2% जो डाउट होता है आपके माइंड में कि फिर कुछ आ जाएगा जो इसको डिले करेगा, तो वो हमेशा रहता है रचित। एंड somehow that इस पे I would like to add one thing more. I was just going through a report, and it was the report released by CNN. CNN gave out a report that till 9th of June, Trump 39 times came out and said that we are at the verge of closing the deal and everything. So 39 times, 28 फरवरी से लेकर अभी तक में, तो डेफिनेटली जो फ्राइडे को हम सिचुएशन देख रहे थे वो उससे एक और +1 ही दिख रहा था। बट एनी हाउ, जिस तरीके से सिचुएशन बनी, बट कंफ्यूजन अभी भी है बरकरार। मतलब इफ आई ट्राई टू रीड मच इनटू इट, पहले they were saying that we are signing the deal. Now they have actually signed a MOU which make them do the deal in 60 days. So it is again very confusing. किस तरीके की डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है? रचित देखिए, ये क्या है, एक there is also a lot to do with how these things are reported on the news for the layman. सो अब एक लेमैन को हम क्या समझाएंगे कि क्या एमओयू है, क्या लीगैलिटीज है, क्या है। सो दे हैव आई हैव सीन हेडलाइंस especially on social media which says deal sign, Hormuz opens.
जबकि एक क्लियर कट ये है कि दिस डील इज टू बी एग्जीक्यूटेड ओवर द नेक्स्ट 60 days. Hormuz is to be opened 100% over the next 30 days. US will start removing its naval blockade and it will take 30 days to remove completely. So, the layman does not go through the details. वो आपका और मेरा काम है, मैं वो नहीं बोला. बट अगर 4 वर्ड्स लिखे हैं हेडलाइन में, डील साइन हॉर्मुज ओपन, ये क्या इंडिकेट करता है? ये होता है कि ये इंडिकेट होता है कि भाई hundreds of ships are now passing through Hormuz, और ऑयल आएगा, और मतलब suddenly it paints a very very unrealistically positive picture of a very very far off future at present. So Because practically nothing of this sort is really happening. I was just going through this news update. I believe it was day before yesterday. 2 Irani ships passed the American, area that they have tried to control. So deal done, straight open, and 2 ships passing. You're putting it on paper. So I don't know what to read, what not to read, whom to believe and not to believe is becoming very difficult. And similarly, markets, how do you see the entire week? Because I believe that on Monday, with the gap up, we were trading somewhere near to 24,000. And for the entire week, if we check, it has actually hovered around 24,000, 24,150, and then 23,850, 900 levels. So the markets are also behaving in a very undecisive manner. How do you see the markets behaving going forward? देखिए रचित, to answer your question, let me put you back to last week. Last week Friday, if you remember, last 1 hour of, in fact मेरे सामने यहाँ पे पिछले 3 वीक का निफ्टी चार्ट खुला हुआ है. If you remember last week Friday, and we discussed this over the video, I remember it very clearly, that पूरे week कोई action नहीं हुआ है, and last 2:30 to 3:30 on a Friday, we have suddenly seen a 300-400 point upside on Nifty. After Nifty spending only 150-200 point range in the whole week. Okay. So this is normally an indicative of something which is big going to happen, which might happen later on in the evening when, in the US and Europe markets are open and we are shut. So we were taking impact of that. So ये जो आप बोल रहे हो कि ये डील साइनिंग की जो ये बात अब थोड़ी आगे बढ़ी है, मैं ये नहीं बोल रहा हो रही है नहीं हो रही है, मैं बोल रहा हूँ चलो इट्स अ कपल ऑफ स्टेप्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, नो डाउट अबाउट, राइट. ये आगे बढ़ी है. ये बात का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आना था मार्केट में, टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपने फ्राइडे को ले लिया, क्योंकि फ्राइडे से पहले हम 23,300 पे बैठे हुए थे, 23,250, 23,300 पे बैठे हुए थे, करेक्ट. फ्राइडे इटसेल्फ सॉ 450 पॉइंट्स. आप चार्ट अगर देखें तो फ्राइडे का सेकेंड हाफ, द निफ्टी गोज लाइक दिस straight, and it closes over there. Okay, to which I was personally skeptical, and if this thing does not follow through, and I in fact mentioned also, which I was thankfully proven wrong by the markets, which I mentioned also that अगर ये न्यूज पे जो बढ़ा है और न्यूज फॉलो थ्रू नहीं करती है इस पे, तो मंडे हमें गैप डाउन देख सकते हैं. बट व्हाट हैपेंड वाज द ऑपोजिट. मतलब वही वो शेयर आया के बाद मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये होगा, और ये हो गया. तो अब मतलब एक सच में शेयर आ गया, एंड आई एम देयर थिंकिंग कि ये नेगेटिव होगा, बट एक्चुअली सच में ये न्यूज फॉलो थ्रू कर गई. So what we saw on Monday was again another gap up, because somehow it got ratified. The rumor that the deal is going to be signed, created an upside of about 450 points on market. Then it closed for the weekend. Nothing negative happened in the weekend. Plus Monday को ये अनाउंस हो गया कि फ्राइडे को ये डील
स्विट्जरलैंड में होगी. So it got ratified, which is why we saw the up move towards 24,000. Now, Rachit, Thursday और Monday के बीच में there is only two trading sessions, correct? What is the level of jump we have seen between last Thursday and this Monday? From 23,200 to 24,000, 24,100. In fact, इस week का high अगर देखें तो 24,184 है. And this we touched yesterday, which is Thursday. So last Thursday और इस Thursday में हम 23,200 और 24,184 देख रहे हैं. Around 1,000 points. Almost 1,000. Now tell me, ये जो frenzy है, ये न्यूज ड्रिवन है. ये न्यूज ड्रिवन है कि भाई हॉर्मुज खुल रहा है, ऑयल इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे. क्लियरली वी सी द इम्पैक्ट ऑन क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड ब्रेंट. You know, at one point it went down all the way to 73, 74. I think it has come up now to close to $80 or something like that. Okay. अभी हम 1,000 पॉइंट ले चुके हैं इसका अपसाइड, राइट? So now, even if things happen, how much more upside do you think will it take when we have already taken 1,000? अच्छा, इसमें एक और point that I would like to highlight today, what happened in the daytime. We got a news that because Israel is hitting on southern parts of Lebanon and trying to kill Hezbollah, Iran is not going to Switzerland to take the things ahead to discuss those 14 points. I don't know why the market did not react to it in the manner it should have. And similarly, क्रूड में भी वो मोमेंटम नहीं था. सो देयर इज टू मच ऑफ कंफ्यूजन. हो रहा है, नहीं हो रहा है. 1000 Rachit, also I'll tell you something. A lot of news is not being covered by mainstream media. It's not very out there in the open. Okay. So if there are let's say about 150 news agencies in the world, and there are another 500 newspapers and tabloids in the world. If किसी के एक सोशल मीडिया या ट्विटर अकाउंट में कहीं एक ट्वीट अगर कुछ आता है जो ऐसा दिखता है, तो ये इतना रेलेवेंट नहीं हो जाता है कि ये एक्चुअली मार्केट्स को चेंज कर दे. ओके. दूसरा ये भी हो सकता है कि if this was covered by one or two odd news agencies, okay, maybe the market actually saw it, and that is why it maintained a down of, like, Nifty was down 200 odd points through the day. Okay. And अगर आप सिर्फ आज का चार्ट देखें निफ्टी का, तो निफ्टी ब्रॉडली स्पीकिंग 23,900 पे ही था. 900, 950, 900, 950 ऐसे ही चल रहा था. It is only exactly at 3 o'clock it shifted from 23,900 to suddenly above 24,000 in last half an hour. Or I think it touched a high of 24,047, 24,047. तो आप 23,900 से मोटा मोटी आप 150 पॉइंट ऊपर आप समझ लीजिए. And it's in that, and we know that the average of Nifty is decided by last half an hour of trading. Okay. तो ये 3 से 3.5 का जो मूवमेंट है निफ्टी, मतलब it is like somebody has taken Nifty and kept it above 24,000 so that we get a closing above 24,000. It is a very calculated move. It looks like a very calculated move. So then in that case, where are we heading for the next week? What are the levels? Like I said, मुझे ये calculated move लग रहा है. मुझे ये natural ऐसा रचित दो ही सिचुएशन में होता है. या तो कुछ बहुत अच्छा आने वाला है जो हमें पता नहीं है हमारे मार्केट, like last week, like we were scratching our heads कि ऐसा क्या हुआ एक घंटे में जो 400 पॉइंट ऊपर चला गया. ओके. बाद में हमें पता चला क्या हुआ.
करेक्ट. अभी सिर्फ 100 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है, एंड इट लुक्स वेरी वेरी दिस थिंग दैट वेरी वेरी एविडेंट दैट इट इज मैनेज्ड टू क्लोज अबव 24,000. इनफैक्ट आज का निफ्टी क्लोजिंग आप देखें तो 24013 है. Hmm. So precise. Okay, so this last upside I will negate. I will not take a lot into account, a lot of this into account. The entire day that it spent at 23,900, 950, after spending a whole week on the upside, is something that I would really think about and give a lot of weightage to. Okay, we have moved up, no doubt about it. If things happen in favor of the world, I would say in favor of the world is peace is in favor of the world. If things happen in favor of peace, we maintain this. We stay above 23,800 easily. Acha. Okay. If there is a threat to the peace, then we go back clawing down under 23,800. Okay, largely this week, or you can say last 2 weeks or 3 weeks, our market have unfortunately been a kind of a derivative of crude oil prices, Hmm. which is again not the correct way to, for markets to move without correct levels. So अगर क्रूड ऑयल 90 का 70 हो जाता है, एंड उसके चक्कर में हमारा मार्केट ओवर 3 days और 4 days 800-900 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो आई वोंट रीड टू मच इनटू इट. सिमिलरली अगर 70 का 120 हो जाता है क्रूड, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द वरी एंड ऑल दैट मार्केट 800 पॉइंट 1000 पॉइंट टूट जाता है, तो अगेन आई विल नॉट रीड टू मच. So this is something that is created due to crude oil movement, due to worries arising from crude oil prices. कि हाँ ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि भाई क्रूड ऑयल बढ़ेगा, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, हमको कास्केडिंग इफेक्ट्स हमारे इकोनॉमी में आएंगे, वो खराब होगा. आई एग्री, विच इज व्हाई यू आर डिस्काउंटिंग इट, बट टू व्हाट एक्सटेंट? So Okay. it is always an exaggerated kind of a movement, whether it's upside or downside. Okay. And in that case, what are the upsides that we're looking at? अपसाइड देखिए, आई थिंक 24,000 के ऊपर क्रॉस किया है और करके बंद हुआ है. सो Okay. टेक्निकली तो इट्स अ वेरी बिग बिग साइकोलॉजिकल बैरियर 24,000. Right. तो अगर वो मेंटेन करता है तो मेरे हिसाब से 24,300 400 तक एक बार नेक्स्ट वीक भी दिखा सकता है, इफ थिंग्स डू नॉट गो बैड. बट Got it. अगेन Rachit, like it is very difficult to predict like how this right now, because right now what is happening, we are we are reacting too much, or not just India, the world is reacting too much to geopolitics, to crude oil prices, and and very less weightage is being given to the our macroeconomic condition, our corporate earnings and all that. This is the problem. So अब क्या है, ये जो predictability है on geopolitics and crude oil prices, that is not very accurate, so to say. Nobody can say कि अभी crude 70 रहेगा, 75 रहेगा, 80 रहेगा, मे बी 100 चला जाएगा अगले वीक में. तो अगर मार्केट उसी पे रिएक्ट कर रहा है तो फिर देन इट्स अ वाइल्ड हॉर्स. 23,800, 24,200, 24,300. This is the Right. range. And chaliye, truncated week. It's not a very short range that I have given. 500 points on Nifty. But the We have seen, volatility that we are seeing, it is quite reasonable to have this kind of range. Na? yeah, but we have seen Rachit, if you remember, very recently we have seen Nifty being volatile in 200 points also for the whole week. It's not a very unbelievable kind of range. चलिए, truncated week भी है, and most probably we'll get back in touch on Thursday, Right. which will be the last working day. As always, it was fun learning and understanding
the markets. Have a happy weekend. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye.